बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बुक अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट क्लास 7 और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लेसन नंबर 1 एन इन्विटेशन टू फाइट, जिसकी रीडिंग मैंने आपके साथ 2 पार्ट्स में शेयर कर दी है। आज उसकी एक्सरसाइज हम शेयर करेंगे, तो वीडियो आपने ज़रूर एंड तक देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का पहला ए पार्ट है, मीनिंग्स आपने राइट करने हैं। तो चलिए मैं आपके साथ ये सारे जो मीनिंग्स हैं वो शेयर कर देती हूँ। देखिए जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। पहला है एग्जॉस्टेड, टायर्ड, क्वेश्चनिंग, हैविंग डाउट, observation, the act of nothing, prowl, vendor, retried, not in used, available, in hand, bloodthirsty, murderless, squaring, putting someone to wall, nasty, delisty, dexterity, doing something skillful, seconding, agree with, फॉर्म, प्रोसीजर। ये था हमारा जी क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने वर्ड्स के मीनिंग राइट करने थे। इनको आपने अच्छे से मेमोराइज भी कर लेना है, इससे आपको टेक्स्ट में जो रीडिंग है वो बहुत इजी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हु गेव यू लीव मीन्स हु अलाउड यू। This manner was so final means his order put an end to the conversation. Next, my heart failed me means I lost courage. According to form means following the procedure agreed on earlier. Do for me means show me. आगे हमारे पास नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शंस हैं, यानी बेस्ट आंसर आपने इसमें चूज करना है। पहला है व्हाई वाज पिप सरप्राइज्ड व्हेन ही लुक्ड इन एट द विंडो एंड सॉ द पेल यंग जेंटलमैन। इसका आंसर है ही हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू सी एनीवन इन द हाउस। हाउ डिड पिप रिएक्ट टू द पेल यंग जेंटलमैन्स प्रपोजल टू फाइट? ही वाज डिसमेड। How did Pip feel before the fight? He was annoyed at being forced to fight. What did Pip admire about the pale young gentleman? He admired his courage in continuing a losing fight. Next page, page number 6. How did the pale young gentleman sense the end of the fight? He told Pip that he had won. अब हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, जो कि अक्सर हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द पेल यंग जेंटलमैन डूइंग व्हेन पिप लुक्ड इन एट द विंडो? व्हाट एविडेंस ऑफ द एक्टिविटी डिड ही शो? आंसर देखें इसका। द पेल यंग जेंटलमैन वाज स्टडिंग व्हेन Pip found him as his cloth had ink stain. What was the attitude of the pale young gentleman towards Pip when they met first? Answer. The pale young gentleman's attitude was friendly with Pip as he greeted him with "Hello, young fellow." Next question. How did Pip indicate his acceptance of the proposal to fight? Answer. Pip accepted the proposal to fight by following him where he led. Question number 4. Why was Pip so surprised when he hit the pale young gentleman the first time? Why was he surprised again the second time? इसका आंसर देखें। Pip was surprised the first time he hit the pale young gentleman
as he was lying on his back with his bloody nose. The second time, when the pale young gentleman was lying on his back with a black eyes, surprised Pip once again. Next देखिए. How did the pale young gentleman win Pip's respect? What does this tell us of this character? Answer. The Pip young gentleman won Pip's respect with a wonder, courage and sportsman spirit. Yes, sportsmanship. Next question. When did the pale young gentleman give up the fight? Answer. When the pale young gentleman could not see Pips clearly due to the bad hit on the back of head, he gave up the fight. Last question. Do you think the pale young gentleman was a good sport? Substance, your answer. Suspected, your answer. He was our best of sport. He made the initial challenges and allowed no lack of sportsmanship when he was defeated. तो बच्चों ये थी मेरी आज की वीडियो. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लेसन नंबर 2 एजिंग की जो रीडिंग है वो शेयर करूँगी. तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मुझे दुआओं में याद रखिए. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा. अल्लाह हाफिज़.